Hello everyone. So today we are releasing our first book. This booklet will be containing ethics solved case study from 2013 to 2025. Total 13 years, 6 case studies each, 78 case studies जो है we have covered in this booklet. Okay. So first thing in this video I want to explain कि how you can use this booklet and what we have given in this booklet. ठीक है, so that you will be able to utilize it in a better manner. ठीक है. So all those students who are appearing for 2026, also 2027, ठीक है, तो उन लोगों के लिए this booklet is going to be kind of one stop solution. मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन या फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन है ही, बट इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स केस स्टडी, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है कि क्या क्या पूछा जाता है, एंड यू नो कि हाउ यू हैव टू राइट केस स्टडी बेसिक, ठीक है, कि ऑप्शंस बनाने होते हैं, स्टेक होल्डर्स लिखने होते हैं, राइट, एंड ऑल्सो एथिकल डायलेमा, व्हाट आर डायलेमास, व्हाट आर एथिकल इश्यूज, ठीक है, and then if you know how to make options basically, and if you know what is going to be your final solution and how to integrate certain ethical principles, ठीक है, तो अगर इन चीजों का बेसिक आइडिया, तो दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे वी हैव गिवन यू ऑल द थिंग्स इन अ वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर. एक पेज में एक केस स्टडी का हमने आंसर दिया, ऑल्दो द कंटेंट इज क्वाइट comprehensively covered, so उसमें कंटेंट बहुत है, so you will understand how you can answer the case studies. ठीक है, तो पहले let's see कि what we have given in this book and how I have framed this book. तो in first 44 pages, ठीक है, I have given all the case study questions. ठीक है, और उसके बाद 78 pages में I have given one page each for one case study. ठीक है, total it is 121 pages in total to study, बाकी cover page and everything. ठीक है, तो what you have to do या what you can do या how you can utilize this book best is, एक तो मैंने केस स्टडी के बाद साथ के साथ सॉल्यूशन नहीं दिए हैं. द रीजन फॉर दिस इज कि आप केस स्टडी को पढ़ेंगे, यू विल ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है, क्योंकि इफ यू आर राइटिंग 2026 मेंस तो यू विल ब्रेनस्टॉर्म इट. ठीक है, डेफिनेटली, तो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा. यू विल लुक एट इट कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास अवेलेबल. ठीक है, देन यू हैव टू इवैल्यूएट एंड एग्जामिन ईच ऑफ दीज ऑप्शंस. ठीक है, option available in examination and which option do you think. This is kind of a standard format of a case study question. Okay, so similarly I have given second case study of 2025, third case study, fourth case study, है ना, fifth, sixth, and then 2024 की 6 case study. So the sequence is first the latest year 2025 1 to 6, and then 2024 1 to 6, like this I have gone to 2013 1 to 6. मतलब 2025 से 2013 in reverse order we have gone, and in that same order I have given the answers to these case studies, right? So this is 2025 case study 1, जो विजय वाली case study हम देख के आए थे, उसके answer what you can do. ठीक है, so this is only this is not a like basically an introduction, this is the facts of the cases. ठीक है, facts of the case. So इसमें से you can briefly write as an introduction. Then I have given options. ठीक है, then ethical dilemmas faced, then most appropriate option, and then I've tried to give one ethical principle. Why this option? Also I've justified the option, and then ethical principle, and then governance principle. In every case study I've tried to give either one ethical principle or governance principle or both. ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस हियर इज, मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब किसी केस स्टडी को सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट, तो व्हाट दे आर लुकिंग इनटू इज टू मेक 3 ऑप्शंस, ठीक है, मैक्सिमम 4 ऑप्शन बना देते हैं, राइट. तो मोस्टली 3 ऑप्शंस आर 2 एक्सट्रीम्स, ठीक है, एंड देन 1 सेंटर. ठीक है, एंड देन तो आप अगर ऑप्शन बनाएंगे तो मतलब एक्सट्रीम 1, एक्सट्रीम 2, एंड देन सम मीन, राइट, ऐसा एक ऑप्शन बनाएंगे. और when you are looking कि which of the option would be most appropriate and why, तो आप middle path को generally choose करेंगे. That is more or less the right answer. ठीक है, ethics teaches us to avoid extremes, right? This is the truth. ठीक है, but when we are talking about option, तो option हम कैसे बनाते हैं? Option हम बनाते हैं single liner.
राइट। तो हम 3 या 4 ऑप्शन बना देते हैं एंड देन वी आर गोइंग फॉर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कैन नॉट बी अ सिंगल लाइनर ऑप्शन, राइट, हैज टू बी अ मिक्स ऑफ 2 or 3 ऑप्शन. So in this book, what we have tried is we have tried to give you 4, sometimes 5 or 6. Mostly I've tried to give 5 or 6 options. ठीक है, जितने ज्यादा ऑप्शंस बनेंगे उतनी ही आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वुड बी सीन, है ना। जितना ज्यादा ऑप्शन बनाएंगे उतना ही आपका मल्टी pronged अप्रोच टू सॉल्व सर्टेन केसेस विल बी सीन. तो ट्राई टू फ्रेम एटलीस्ट 4, है ना। और इस बुक में वी हैव ट्राइड टू गिव यू अप टू 6 ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट केस स्टडी इटसेल्फ, तो हमने इसमें कुछ 6 ऑप्शन बना के दिए हैं, राइट। एंड अगेन any one of these option cannot be the direct answer, right? If you can see कि single liner answer तो नहीं हो सकता, right? And for every option we have given you merits and demerits. We have tried to give you 3 to 4 merits and demerits of every option. And also we have tried to give as many keywords, ethical keywords जहां जहां पे हो सके, right? वहां पे हमने जैसे जहां पे हमें ethical keywords देखने के लिखने का मौका मिला, wherever you could give it, तो we have given पब्लिक एंड पर्सनल ड्यूटी, उन सब चीजों को हमने डालने की कोशिश की है. तो यू कैन लुक एट दिस, यू कैन रीड दीज ऑप्शंस. टोटल 78 केस स्टडीज, राइट. तो हर केस स्टडी में 5-6 ऑप्शन समझना है, तो यू विल हैव एम्पल ऑप्शंस. तो दिस इज हाउ यू कैन improve your thinking कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. एंड देर इज नॉट ओनली लाइक one middle path, right? There can be multiple middle paths as well. So you can answer in mix of these multiple middle paths, ठीक है. तो this is what we have tried. At the same time, एक और important aspect जो है most appropriate action, as I explained कि it is mix of 2 or 3 options that you have given, that could be the most appropriate action. And then we have given some keywords in how you can justify the option, right? Always there will be कि आप जो भी path choose करोगे उसको justify करना पड़ेगा. And while justifying, we are looking for some keywords, and I've given some keywords in this book. So if you are writing these keywords according to the demand of the case study, so you will be in a very good place to answer your case study. And this is an added thing that I have given. Most of the students, they won't write any ethical principle. I have also tried to give you at certain places an ethical principle. At certain places, I have tried to give ethical, thinkers. Some thinkers and unke thought process, what thought they have given, right? For example, thinkers and ethical concept, like in the second case study, given Mahatma Gandhi, Amartya Sen, John Rawls, and some Aldo Leopold, ठीक है, इनके बारे में. तो आई हैव गिवन देयर थॉट्स इन दिस एज वेल, ठीक है. दिस केस स्टडी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चैट जीपीटी से बनी है. दिस हैज बीन रिसर्च्ड एक्सटेंसिवली, राइट. एंड ethical principles either given, right, or ethical thinkers I have given. So in this way, you can add a unique aspect, right, in your own case study, एक unique चीज about certain thinker or some ethical principle underlying the case study. So that will give you a very good, comprehensive answer of your case study. तो इसलिए इफ यू रीड दी 78 केस स्टडी, आई थिंक कि आप लोगों के पास बहुत सारे एथिकल वो आ जाएंगे, कोट्स आ जाएंगे. इफ यू डोंट हैव टू राइट द कोट एज सच, I have in some place I have given the quote. You can just explain what Kant is saying, right? What Max Weber is saying according to this. So while you are justifying your option, or while you are concluding your answer, or while you are writing कि इसका ethical principle क्या है, what you are thinking about the case study. So writing these thinkers and writing the ethical principle involved will help you in, getting a lot of a few extra marks, right? क्योंकि बाकी सब लोगों का एक set pattern से आंसर चलता है. And when you are writing in a set pattern, तो it is not difficult, right? 3 things, right? एक positive, एक negative और एक middle path, right? This cannot be very difficult. Everyone is writing that. So your case study has to be a little different. Your case study has to be a little more comprehensive. ज़्यादा options, and then dilemmas also you need to understand. Now, sometimes some stakeholder क्यों लिखते हैं, even not asked, right? So when you write stakeholders, right, so that will help you in understanding कि when you are making options, तो आप जब options के merits और demerits आप बनाते हैं, तो you will be able to write कि ये किसके लिए merit है और किसके लिए demerit है, right? Sometimes if you are choosing an option of exit, ठीक है, कि नहीं,
shrug my duty and so I'll shrug my duty and I'll ask someone else to take, or I'll ask the senior to replace me. Sometimes that is one of the option. तो उस केस में क्या होगा, you will have a positive impact on yourself कि you will be saved from that all the thing. At the same time there will be negative on those people, for example this refugees, and कि they will face certain issues if you take off, right? If you are not taking your duty seriously, or if you are leaving your duty on someone else, right? तो उस टाइप से when you know the stakeholders of the case study, तो you will be able to talk about their benefits or their issues, and those you can write in the merits and demerits. And at the same time when you are writing ki what would be the most appropriate action, so you will consider them, so your appropriate action or your course of action will be very good, right? So this is the purpose of this booklet, to make you understand कि ये केस स्टडी को क्या क्या कितने कितने टाइप्स में आंसर किया जा सकता है. गिवन मल्टीपल टाइप्स, ठीक है, एक टाइप में नहीं दिया है. एक्शंस भी अलग अलग तरह के दिए हैं, एंड each and every part of the question is definitely answered. At the same time I've tried to give you different aspects also जो कि नहीं पूछा गया है. You don't have to write all these things in the answer, right? केस स्टडी के आंसर में इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता ऑब्वियसली, राइट? बट यू कैन टेक द हिंट. किसी में आपने एथिकल प्रिंसिपल डाल दिया, किसी में आपने आउटकम्स डाल दिए, किसी में अपने स्टेक होल्डर्स डाल दिए, व्हाट इज एट स्टेक यू हैव एक्सप्लेन, सो दैट विल हेल्प यू गेन सम एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है. So this booklet, so this book will be released right soon. Today on 27th of June. Today itself it will be released on my Telegram channel. My Telegram channel is Gyan Mimansa 11. Right. I'll also share I have shared this poster of the booklet, so you can scan that as well, and I'll also share the Telegram channel in my comment box also, so you can join the channel and get the book. Thank you.